0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, not much more from 0.3, but specifically we will see the overview of the Advocate Act, which is the most important part and the genesis of our profession. This is the Advocate Act. It's a one part for the today's discussion. Tomorrow we will discuss the point 2 and point 8, 9 and 10. These 4 points I'll discuss tomorrow. Thereafter, we will discuss question papers and answer sheet. This is the agenda what in my mind. सही है, ठीक है ना ये? Yes, sir. चलिए, तो 1 by 1 करके अब समापन समारोह की तरफ हम लोग मूव करते हैं. So this is the Advocate Act, right? अब देखिए, जरा एडवोकेट एक्ट को या किसी भी एक्ट को समझना हो, किसी भी एक्ट को समझना हो तो सबसे पहले हम इंडेक्स को ब्रेकअप करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, इन ब्रेन सेट करते हैं, जिसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, व्हिच इज रिटन ऑन द स्क्रीन ऑन एडवोकेट एक्ट. इसमें कई पार्ट हैं, चैप्टर्स हैं. सो सबसे पहले ये देख लें कि एडवोकेट एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और कौन सा चैप्टर किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को डेडिकेट किया हुआ है. Chapter 1 is dedicated to the preliminary. Chapter 2 is the Bar Council. Acha. Chapter 3 is dedicated to the admission and enrollment of advocates. So the definition and otherwise, यहाँ पर देख रहे हैं the senior advocate and other advocates, which is the important part, is the section 16. सेक्शन 16 भी, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे लिटिगेशंस हो गए हैं कि सीनियर कैसे डेजिग्नेट होने चाहिए, उसके क्या पैरामीटर होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस भी पेंडिंग है इन दिस रिगार्ड. So this is the admission and enrollment of advocates. This chapter is dedicated for them. थोड़ा और आगे चलें तो there is important part, right to practice. बहुत कम सेक्शन है, 29, 30, 32, 33 and 34. One is repealed already. बट एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, द राइट टू प्रैक्टिस में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप नोटिस करेंगे, और इवन अर्लियर वन, दिस इज एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट, व्हिच इज पावर टू मेक रूल्स. Power to make rules means what? This is some sort of legislative power delegated to certain body, certain specified body. ये रूल बनाने का पावर by the act given to a certain body, जो उस एक्ट से पता चलेगा. और आप यहाँ है, राइट टू प्रैक्टिस से रिलेटेड है. दिस रूल्स, दिस पावर टू मेक रूल्स इज कन्फाइंड टू द एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ द एडवोकेट. ये याद रखिएगा. इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारे पार्ट इन्वॉल्व हैं. नाउ यदि मैं देखूं यहाँ राइट टू प्रैक्टिस, तो यहाँ पर एक और प्रोविजन है, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स. फॉर व्हाट?
for the purpose of practice and procedure. It is some sort of regulation. याद रखिएगा, regulation means restriction. Restriction means restriction on what? Your rights. And which rights? Simply we can say right to practice and procedure under Article 19(1)(g), as well as the freedom of expression, isn't it? तो ये रिस्ट्रिक्शन है वहां पर, तो इसको स्कैन करना थोड़ा सा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि इस रिस्ट्रिक्शन को जस्टिफाई भी कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में भी हम ले सकते हैं। कोई भी पॉइंट है उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों पॉइंट्स होते हैं। आपको सिचुएशन के बेसिस पे प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ब्रेन में रखना चाहिए, क्योंकि इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज आपको ऑब्वियसली एडवेंचर की तरफ लीड करता है और डिसएडवांटेज फेयर की तरफ लीड करता है। रेगुलेशन करेक्शन है, फाइन लाइन है, और इसी दोनों के बीच में पूरा प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे या किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि इंगेज अ लोकल लॉयर, यू आर नॉट अलोन। आप कहेंगे एडवोकेट एक्ट में तो सिंपल एडवोकेट है, मैं भारतवर्ष में कहीं भी जा सकता हूँ। वो कहेंगे जाओ, यहाँ नहीं, यू आर रिस्ट्रिक्टेड। किस पावर के तहत हाई कोर्ट ऐसा रूल बनाती है? दिस इज द पावर 34, पावर अंडर सेक्शन 34। अब वो रूल जनरल है, वो रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड होता है, सो रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल, और दैट रिस्ट्रिक्शन इज अगेन एक्सरसाइज्ड बाय एडवोकेट एक्ट इटसेल्फ। जो ये वही एडवोकेट एक्ट है जो आपको राइट टू प्रैक्टिस देता है, बट एट द सेम टाइम हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि मेक योर ओन रूल रिगार्डिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो देयर माइट बी पॉसिबल द conflict बिटवीन द टू रूल्स, और यहाँ पर भी आपको सिंक्रोनाइज डेवलप करना है या कोर्ट को डेवलप करना है। इस पे कई वर्डिक्ट भी आए हुए हैं, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट। कैसे इस रिस्ट्रिक्शन को जस्टिफाई किया हो, क्यों जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। जरा आप इसके हेड को देखें, एडवोकेट 29 स्पेशली, advocate to be the only recognized class of the persons entitled to practice law, which is substantiated अलग, मतलब only का मतलब यहाँ पर ये है कि it is monopoly, none other than advocate can practice। अच्छा, at the same time कोर्ट को पावर है, that power is confined to, जरा सा ये पॉइंट आप देखिए, टू परमिट appearances, उसके बाद इन पर्टिकुलर केसेस। कोर्ट पर्टिकुलर केस में किसी और को परमिशन दे सकती है, अलाउ कर सकती है, ये कोर्ट का अपना डोमेन है। हु मे नॉट बी एन एडवोकेट, वो एडवोकेट ना हो उनको भी कोर्ट केस डिफेंड करने का परमिशन दे सकती है। बट बॉटम लाइन इज दिस कि एवरी सिटीजन और लिटिगेंट इज द कस्टोडियन ऑफ हिज ओन केस। मतलब every individual can defend their own case. It is the most important part.
और वो आपको अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हायर करता है। So you are representing the case in the representative capacity. What is the mean of this representative capacity? Representation. एक लाइन यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने की बात है, ये क्रूशियल पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक पार्ट यहाँ पर ये है कि यदि कोई क्लाइंट चाहे तो इन पर्सन अपना केस डिफेंड कर सकता है, वो कर ही सकता है, क्योंकि कोई दूसरा वो नहीं चाहेगा, नहीं एंगेज करेगा, उसकी कोई कंपल्सन नहीं है एंगेज करना। दूसरा पार्ट यहाँ पर ये है कि आप रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी में आपको वो हायर करता है टू रिप्रेजेंट योर ओन केस लॉफुली, और आपका और आपके क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, इट इज रिलेशनशिप नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। दैट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड थ्रू वकालतनामा। सो वकालतनामा एक क्रूशियल लीगल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप उसके केस को रिप्रेजेंट करें ऑन द बेसिस ऑफ फीस। और आपको फीस नहीं मिलेगी, दिस इज द ओनली कंडीशन यू इन्फॉर्म टू द कोर्ट एंड विड्रॉ विद ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट, नॉट एब्रप्टली यू कैन विड्रॉ योरसेल्फ लॉफुली। प्रैक्टिस में बहुत कुछ है, बट प्रॉपर चैनल यही है। एक चीज आप याद रखिएगा, हस्बैंड एंड वाइफ लीगल एंटिटी है, सिंगल एंटिटी है, बट even husband or wife cannot represent their case before court, their the counterpart case, क्योंकि कोर्ट उसको भी अलाउ नहीं करता है, लॉफुली वो अलाउड नहीं है, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट। पिटिशनर मीन्स पिटिशनर, नॉट देयर हस्बैंड, नॉट अदरवाइज। माइनर चाइल्ड है तो उसके लिए उसका फादर रिप्रेजेंट कर सकता है या मदर, जो भी। दीज आर द कंडीशन में अराइजेस, और ये क्रूशियल कंडीशन है कि एक मान लीजिए कि मेंटली सिक पर्सन है और उसके बिहाफ पे वो पर्सनली तो केस रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, इवन एफिडेविट भी नहीं कर सकता, देन हु कैन, क्या हो सकता है ऐसे कंडीशन? सो दीज आर द एक्सेप्शनल कंडीशंस इज ऑलरेडी डेल्ट विथ सुप्रीम कोर्ट रूल्स। ये याद रखिएगा, नॉट फॉर द एडवोकेट पर्पस बट फॉर द पर्पस ऑफ लिटिगेशन। कैसे अरेंजमेंट हो सकता है, कैसे प्रोसीड कर सकता है, उसमें मैं नहीं जा रहा। दिस इज द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स, इन जनरल पार्ट में वो अवेलेबल है। नाउ मेरा फोकस यहाँ पर ये है कि राइट टू प्रैक्टिस के अंदर एक चीज और आता है, एंड दैट इज द मोनोपोली, एंड द अनदर पार्ट इज कोर्ट ऑल्सो कैन परमिट टू एनीवन an advocate alone. This is section 33, read with 29, सेक्शन 29 रीड विथ 33। एक लाइन में आप देख लीजिए, आपको इंडेक्स से ही पता चल जाएगा। एडवोकेट अलोन इंटाइटल टू प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मीन्स व्हाट? प्रैक्टिस मीन्स नॉट फॉर योर ओन केस, you can represent to others case, that means the practice or entitlement to practice। ये मैं कहना चाह रहा था, ये मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा। आई गेस आई एम सफिशिएंट क्लियर ऑन दिस पॉइंट, isn't it? Yes, sir. Now थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं, we will see this particular section। बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ से आता है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, और स्पेशली वो रूल्स यदि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो आपकी बेचैनी बढ़ेगी।
and what is the right of advocates to practice. So this chapter is a little bit for the purpose of awareness it is required. आप कभी भी रेफरेंस ले सकते हो, सब्सटेंशिएट कर सकते हो, अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो by the referring this section, or even for the analysis, whatever you want you can do. Now come to next chapter, and next chapter 5 is the important part. मैं इस चैप्टर को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर का रेफरेंस होता है, चैप्टर इज बीइंग रेफर्ड. This chapter's name, head is being referred, advocates of conduct of advocates. So basically we are being focused on our conduct. आप देख लीजिए, मिसलेनियस पे नहीं जाते हैं, यहीं तक है. This is starts from 35 and conclude by 44. अब जरा देखिए क्या है यहाँ. 35 के अंदर देखिए, punishment of advocates for misconduct. 36, disciplinary power of Bar Council of India, not state. दो बाद में इंसर्ट किए गए हैं, लाइक 36A, 36B कंसर्न टू द डिसिप्लिनरी पावर of Bar Council of India. Changes in constitution of disciplinary committee and disposal of disciplinary proceeding. These are interrelated. उस पे नहीं जा रहे. Now, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर क्या है, 35. जरा हाईलाइटेड पार्ट को नोटिस कीजिएगा, और इवन कोड 35, द पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट. 36 को स्किप करते हैं क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन बिटवीन. नाउ अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. सो दीज आर द एग्जीक्यूटिव अपील. दिस अपील internally to the bar council, state bar council to the central bar council. Now 38 is appeal to the Supreme Court. Other part is some procedural application for section 5 and 12 of Limitation Act. So there is certain limitation on that which is invoked from Limitation Act. Power of a stay of order, alteration in role of advocate, powers of the disciplinary committee, powers of Bar Council of India and other committee, cost of proceeding before disciplinary committee, and ultimately the 44, which is the stay of order limitation. उसमें जाने की वजह सीधा सीधा मैं 44 पे आऊं. A review of order by the disciplinary committee. So there is a review procedure. यदि कोई मिस्टेक है, एरर है, तो उसके लिए रिव्यू कर सकते हैं. कई केसेस आपको दिखेंगे, वो है ऑन बोर्ड, बहुत डिस्कशन में आपके सामने आएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स में आएंगे, जिसमें रिव्यू के नाम पे पूरा का पूरा ऑर्डर ही सेट असाइड करके नया ऑर्डर लिख दिया गया है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करते हुए पुराने वाले ऑर्डर को रीस्टोर कर किया है, और वर्क बार काउंसिल को वार्न किया है कि डोंट डू लाइक दिस. कोर्स मैलाफाइड इंटेंशन कहीं भी हो, अनलॉफुल कहीं भी हो, तो वो पॉइंट आउट किया जा सकता है. हम रूल इज दिस. सो थोड़ा मिसलेनियस पार्ट भी देखते हैं क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, हर जगह रिक्वायर्ड होता है. पेनल्टी फॉर पर्सन, ये देखिए 45 इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स इट इज रेड विथ section 29, read with section 33, and read with section 45, which is called penalty for person illegally practicing in court before
other authorities. Persons, which is not advocate. Penalty for the person who is not advocate. इनके लिए जो इलीगल प्रैक्टिसिंग है कोर्ट एंड अदर अथॉरिटीज, उसके लिए पेनल्टी भी है. पावर ऑफ रिवीजन एंड रिव्यू, वो सारे रिवीजन के भी पावर एंड रिव्यू वो सारे कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं. दिस इज कंसर्न टू द रिवीजन एंड दिस इज कंसर्न टू द रिव्यू. नाउ ये चैप्टर 6 है. अब थोड़ा चैप्टर वाइज हम लोग चले. मिसलेनियस सर्टेन सेक्शंस, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन स्किप करते हैं. एंड देयर आफ्टर द शेड्यूल देयर इज सर्टेन पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. ठीक है, यही स्ट्रक्चर है. कुल मिलाकर के आप देखें तो 60 सेक्शंस हैं एडवोकेट एक्ट के अंदर, नॉट मोर देन दैट. आउट ऑफ देम 7 चैप्टर्स हैं. वी आर प्राइमरली फोकसिंग ऑन चैप्टर 5 एंड ऑफ कोर्स चैप्टर 4 भी कर लेते हैं. 4 एंड 5 एक कोइंसिडेंस है. कोइंसिडेंस यहाँ पर क्लियर है. बार सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बात करें तो वहां का ऑर्डर 4 is giving a right to practice to AoR. वहां से AoR का कॉन्सेप्ट शुरू है. AoR के प्रोसीजर्स हैं, इवन लाइबिलिटी है. सो ये जो चैप्टर 4 है वो ऑर्डर 4 है. 4 का कनेक्शन है. और ये जो चैप्टर 4 है मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज 10, राइट. एंड दैट इज rule 10 of order 4 is talking about unbecoming of AoR. Will come later. ये कोइंसिडेंस यदि आप डेवलप करना चाहें, पैटर्न यदि आप डेवलप करना चाहें तो इस तरह से डेवलप कर सकते हैं. एंड वी कैन थिंक लाइक दिस फॉर द पर्पस ऑफ मेमोराइजेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन इफ एनी, एंड इफ यू वांट यू कैन डू दैट. सो अब हम सीधा सीधा चलते हैं सेक्शन 29. एक बार और आप रिव्यू करना चाहें, 2 मिनट आप एक्सपेंड करें तो आप कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी, second is the bar council, third is the admission and enrollment of advocate, fourth is right to practice, 5 is conduct of advocates, 6 is miscellaneous, and 7 is temporary and transitional sections, including one schedule is also there. This is the schedule. The most and important part of this Advocate Act is this one. Objective. बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है, but I would like to discuss it, not right now, later on. हाँ, एक चीज और आप याद रख सकते हैं. आपको ये याद पर रखना पड़ेगा द एडवोकेट एक्ट 1961. इसके बजाय आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये वाला वर्ड, एक्ट नंबर 25 ऑफ 1961. इसको भी आप रेफर कर सकते हैं. दिस इज प्रॉपर रेफरेंस टू दिस एडवोकेट एक्ट. Act to amend and consolidate the law relating to law practitioners and to provide for the constitution of bar councils and all India bar. इस ऑब्जेक्टिव पे मेरा थोड़ा सा फोकस है, फोकस एंड कंसर्न एंड रिजर्वेशन है, बिकॉज यहाँ पर दो चीज
प्री एडवोकेट एक्ट है और विच इज द बेसिस फॉर द एडवोकेट एक्ट, दैट इज आई एम कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट इस नोट्स। और उसके लिए ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये पूरी हिस्ट्री। यहाँ पर क्लास ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर्स बिफोर एग्जिस्टिंग एडवोकेट एक्ट was the word was the attorney, solicitor, advocate, वकील, लीडर्स, मुख्तार्स, रेवेन्यू एजेंट एंड सो फोर्थ, एक लंबी लिस्ट थी। अब इन सब के जगह सिर्फ और सिर्फ ओनली एडवोकेट। ये सारे जो डेजिग्नेशंस दिए गए थे, सारे डेजिग्नेशंस के अपने स्पेसिफिक रोल थे, लिमिटेशंस था, कंडीशंस था, और उसके हिसाब से ये डेजिग्नेशंस अवॉर्ड किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, solicitors were confined to the draftings only, attorneys was confined to the argument only, revenue agent was confined to the revenue court only. So Mukhtar was the confined to document writing, जैसे डिड लिखना है, एग्रीमेंट लिखना है, तो इन सारी चीजों के लिए कन्फाइनमेंट था। ये वो पार्ट था। एंड देयर आफ्टर ये सारे उसके पीछे के एक्ट है, मतलब कैसे एक्ट आने शुरू हुए। द फर्स्ट टाइम कौन सा एक्ट था जहां एडवोकेट की चर्चा हुई, एक कोर्ट की चर्चा हुई, तो इट वाज द चार्टर एक्ट 1727, 1726। इमेजिन कीजिए आप। और वहां पे मेयर कोर्ट्स वाज इवॉल्व। देयर आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट इमर्ज किया था इन इंडिया। देन बंगाल रेगुलेशन एक्ट, the Legal Practitioners Act first time came into the existence in 1846. And then again, the Legal Practitioners Act 1853. Another was the Indian High Court Act 1861, और यहाँ से हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ। आप कहेंगे कि हाई कोर्ट बाद में आया और सुप्रीम कोर्ट पहले आया। सुप्रीम कोर्ट वर्ड्स का डिस्कशन यहाँ पर था, कॉन्स्टिट्यूशन था या नहीं वो आपको देखना पड़ेगा, और उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है। और जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 था, यहीं पे प्लीडर्स, मुख्तार्स, रेवेन्यू एजेंट, इस सब के लिए स्पेसिफिक एक्ट आया था 1865 के अंदर। सो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट अगेन 1879, द लीगल प्रैक्टिशनर्स विमेन एक्ट 1923, द लीगल प्रैक्टिशनर फी एक्ट 1926। सो फी रेगुलेशन की बात जो हमने कही थी, उसके एक्ट एग्जिस्ट करते थे पहले। और देयर आफ्टर बाय एक्ट द इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 एग्जिस्ट किया। कुछ एक्ट कंकरेंटली एग्जिस्ट करते थे, कुछ क्या एक्ट जो है ना सिक्वेंशियली एक के बाद दूसरा रिप्लेस किया। बट अल्टीमेटली आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा मंथन हुआ कि कैसे एडवोकेट एक्ट को कैसे बनाया जाए। इसके लिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे SR दास,
उनकी कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया, उस रिपोर्ट का और लॉ कमीशन के रिपोर्ट के कॉम्बिनेशन से पार्लियामेंट को दिया गया। इट टुक अराउंड अ डेकेड, 10-12 साल लगे इस प्रोसेस में। उसके बाद पार्लियामेंट में लाया गया और वहां पर एडवोकेट एक्ट बना। दिस वाज द हिस्ट्री फॉर द पार्लियामेंट एक्ट। So that's what I incorporated into them. अब शुरू से कहें तो मैंने एक वर्ड यहाँ पर ये लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के नीचे थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ एडवोकेट एक्ट। और इस इवोल्यूशन में जस्टिस एसआर दास कमिटी एंड 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, यही दोनों के प्रोविजन एंड रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करते हुए एडवोकेट एक्ट बनाया। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. So, Okay. आपको ये चीज याद रखना होगा, कभी भी एडवोकेट एक्ट के ऊपर यदि आप कमेंट करते हैं तो एसआर दास कमेटी रिपोर्ट एंड 14th, याद रखिएगा 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, 14 वैलेंटाइन डे वाला डेट है ये, याद रह जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और यदि मौका लगे, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, 1-2 पेज का है, बहुत लंबा नहीं है, कंक्लूजन और रिपोर्ट रिकमेंडेशन है सरदास कमेटी का और इनका लॉ कमीशन का, उसको आप देखिए, आपको बिल्कुल वही सारा चीज दिखेगा ये एडवोकेट एक्ट में। और तब 1961 में ये एग्जिस्टेंस में आया हमारा एडवोकेट एक्ट। थोड़ा सा और मैं डीप डाउन जाऊं और मैं सीधा आपको एडवोकेट एक्ट के अंदर जाऊं, तो आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट। टू अमेंड एंड कंसोलिडेट, इतने सारे एक्ट को कंसोलिडेट करने के लिए, द लॉ रिलेटिंग टू द लीगल practitioner and to provide for the constitution of bar councils and all India bar। एसआर दास कमेटी और इनका रिपोर्ट का जो फाउंडेशन था वो ये था कि इन सबको हटाइए और हर स्टेट के अंदर एक बार काउंसिल लीजिए, माने हर स्टेट जहां जैसे पॉसिबल है, और सबका नोडल एजेंसी ऑल इंडिया बार काउंसिल होना चाहिए। और यही 2 स्ट्रक्चर होगा और इसी 2 स्ट्रक्चर पे एडवोकेट्स रेगुलेट हो। और चूंकि ये एक्सपर्ट बॉडी है, तो इनको ही एम्पावर कीजिए कि वो अपना रूल खुद बनाए, अपने एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड खुद बनाए, और अपने नोबल नोबल प्रोफेशन को they will regulate their own. So we must have to provide autonomy to the All India Bar Council or Bar Council as far as possible. So it was adopted by the Parliament, and this Advocate Act came into the existence. It was the date 19th May 1961. Now let us see some terminology which is available in the definition. Under section definition, in this act, unless the context otherwise required, these are the words. A, advocate, and the means, what is the means of that advocate? Entitled in any role under the provision of this act. This is the definition of advocate under the Advocate Act. It is talking about the
entered, sorry, an advocate entered in any role under the provision of this act. आप जरा मुझे थोड़ा सा ये बताइए, what does it mean about the any role? How many roles are there? कितने स्टेट बार काउंसिल्स हैं? Every state bar council has their own role. So, on any role, if you entered your name, you are an advocate. Now, next question brain में ये आता है, whether that does it possible कि someone have two entry into the two different bar council? The answer is no. आपको एक से दूसरे में माइग्रेट करना पड़ेगा, जो आगे पता चलेगा. So, the definition of advocate is there. And so forth. You can see there is the high court. High court के बारे में भी कैसे इसको लेते हैं. Law graduate means what? Law practitioner means what? Means an advocate or vakil of any high court, a pleader, mukhtar or revenue agent, whatever it may be. These are the legal practitioners. Prescribed means prescribed by rules made under this act. Role means role of advocate prepared and maintained under this act. And so forth. These are the state roles, means a role of advocates prepared and maintained by State Bar Council under Section 17. So this is the thing. मुझे इसमें अभी जानना नहीं है. We have to discuss and go to especially directly to the chapter 4. Yes. Just I'll read it without much explaining. Chapter 4. This is the right to practice. 29 says, Section 29 says, advocate to be the only recognized class of person entitled to practice law, subject to the provision of this act. This is the conditional, subject to the provision of this act and any rules made thereunder. There shall, as from the appointed date, be only one class of person entitled to practice the profession of law, namely advocates. Right to practice. Subject to the provision of this act, every advocate whose name is entered in the state roll shall be entitled as the right to practice throughout the territories to which this act extends. So section 30 is giving you the right to practice across the country, subject to your name should be on state roll. Extend in all courts, including the Supreme Court, before any tribunal or person legally authorized to take evidence, and before any other authority or person before whom such advocate is by or under any law for the time being in force entitled to practice. So, section 30 is the important section for you. This creates a right to practice across the country in all court, including the Supreme Court, before any tribunal or person legally authorized to take evidence, and before any other authority or person before whom such advocate is by or under law. So nothing is left. Entire world is covered. Court,
tribunals, persons or authority, anyone. Now, power of court to permit appearance in a particular case. Notwithstanding anything contained in this chapter, any court, this is empowered to any court, authority or person, may permit any person not enrolled as an advocate under this act to appear before it or him in particular case. This is concerned to a particular case only, not as a regular manner, depend on their own expertise and knowledge. At who can assist the court properly for the purpose of assistance only. Advocate alone entitled to practice, except as otherwise provided in this act or in any other law, for the time being in force, no person shall, on or after appointment day, be entitled to practice in any court or before any authority person unless he is enrolled as an advocate under this act. Creates a monopoly of this class. Power of High Court to make rules. The High Court, ab dekhiye, this is the important part. The High Court may make rule laying down the condition subject to which an advocate shall be permitted to practice in the High Court. At the same time, this power is given to the High Court and the courts subordinate thereto. So High Court अपने लिए भी और अपने subordinate courts के लिए भी. So High Court rules is having the jurisdiction not only for the High Court but also all the subordinate court, which includes tribunal also. It was amended. The High Court shall make rules for fixing, and the important part is this: the High Court may make rules laying down the conditions to which an advocate shall be permitted, subject to which an advocate shall be permitted to practice in the High Court and subordinate court. So High Court has power to let down the conditions for advocates. This is lawful. So there is little bit conflicting between section 30 and 34. It is not conflicting. If you will see, condition mean what? Condition is something additional which restrict your freedom or exercise the right. Later on we'll discuss. The High Court shall make rules for fixing. The High Court shall make rules for fixing and regulating by taxation or otherwise the fees payable as cost by any party in respect of the fees of his adversary advocate upon all proceedings in the High Court or in any other subordinate court thereto. This Rules 4 was inserted into the 1974. And without prejudice to the provision contained in subsection 1, the High Court at Calcutta may make rules providing for the holding of the intermediate and final examination for articled clerk to be passed by the persons referred to the section such and such for the purpose of being admitted as an advocate on the state roll and any other matters connected thereto. चलिए इसको रहने देते हैं. So you people are aware about your right. Now let us come to this particular section specifically, which is called the conduct of
advocate, and this is the very central part. Very central means nucleus part of our profession and AoR exam is the section 35 punishment for the misconduct. And this is the most important part throughout your प्रोफेशनल कैरियर. आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा. अब देखिए, सेक्शन 35 it comes through chapter 5, also have subsection 5. There actually they have the 6, but the number is ending up to the subsection 5. इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको मैं थोड़ी देर में इसके बाद ट्रेवल करूंगा यहाँ पर, विच इज द स्टैंडर्ड, विच इज द standard of professional conduct and etiquette to be observed by the advocates. इसके अंदर बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं. देयर इज एन ऑब्जेक्टिव ड्यूटी टू कोर्ट. दिस इज मेड अंडर section 49 1C of the Advocate Act, and this there is a section 1. Various sections are there dedicated to the certain part with the preambles is there. So what I want to suggest, once this condition, this duty is violated, then anyone come with the complaint under section 25 for the purpose of violation of any particular duty violated. So point is this, the entire standard professional conduct and etiquette is mapped or rooted through this section 25 only. I guess I'm clear enough to make my point, isn't it? Yes, sir. So my concern is, let us understand this particular part very carefully, properly, and minutely. I'll take around 10 minutes to explain this particular part. Punishment of advocate for misconduct, where this is section 1, subsection 1, where on receipt of a complaint or otherwise, a state bar council, see, where on receipt of a complaint or otherwise, a state bar council has a reason to believe that any advocate on its roll has been guilty of professional or other misconduct, it shall refer the case for disposal to its disciplinary proceedings. क्लियर है? आपको मैं एक चीज और वार्न करता हूं. मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि दिस section 35 is the most important and nucleus center for us, and it has 5 sub clause, but out of them the central clause is clause 1 only for the purpose of examination. Mind it. आपको इस पूरे क्लाउज याद हो ना हो डजंट मैटर, बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर क्लाउज 1 ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट. और उसके कुछ कैच वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं. वेयर ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट और अदरवाइज, स्टेट बार काउंसिल, बार एसोसिएशन नहीं, बार काउंसिल has reason to believe, this is a very important phrase, that any advocate on its role has been guilty of professional or other misconduct, it shall refer, it's a
reference point only. It's a refer the case for disposal to its disciplinary committee. मैं फिर से वन बाय वन लेकर के चलता हूं. Where on receipt of a complaint or otherwise. अब जरा देखिए ध्यान से. Where on receipt of a complaint. ठीक है. और अदरवाइज क्यों? What reflect this otherwise? Means without complaint also. Yes, sir. Or by court, sir, or refer by court. Whatever it may be. There lot of things are there may be possible. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बिल्कुल क्लियर नहीं. Who can made a complaint? Is this the affected party? Or anyone? Locus is important or not? कॉन्सेप्ट ये है, बार काउंसिल एक लॉयर्स बॉडी है टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंटायर फ्रेटर्निटी. तो एनीवन फ्रॉम द बार, एनीवन ऑन द रोल, यदि वो उसको लगता है कि उसके कंडक्ट की वजह से इस बार की डिग्निटी डिमिन हो रही है, देन दे आर एग्रीव्ड. Plus, whoever is directly affected, this is the indirect way of affecting the profession. So, who can complain? Anyone who can observe, including the court, including the bar member. Litigant, for the purpose to maintain nobility and otherwise. So, the point is, on a receipt of a complaint, complaint किससे receipt होगा वो नहीं कहा हुआ, whatever it may. So broader sense है, broader scope है, anyone can move the complaint for against anyone. Where it can go move to the complaint, complaint will go to the state bar council. और स्टेट बार काउंसिल के बारे में क्या लिखा हुआ है? ऑन इट्स रोल, अगेंस्ट एनी एडवोकेट ऑन इट्स रोल. तो द व्हिच स्टेट बार काउंसिल इज रिक्वायर्ड, जहां पर आपका एनरोलमेंट, isn't it? Now, after that, एक तरफ आपको वो कहा गया है कि एनीवन कैन कंप्लेन, मतलब आपको खतरे में डाल दिया गया है कि चलो हर कोई कर सकता है. दूसरे तरफ एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड है, एंड दैट प्रोटेक्शन इज द बार काउंसिल का अपना कॉन्साइंस हैज रीजन टू बिलीव. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चंस पिकअप किया जाता है कि ऑन कंप्लेंट इनिशिएशन सेट इन मोशन कैसे होगा जब वहां पर कोई कंप्लेन आएगा, राइट? और एक कंप्लेन आता है इन एनी मोड, एनी मैनर और फ्रॉम एनी पॉइंट. यदि वो कंप्लेंट आता है स्टेट बार काउंसिल को, तो स्टेट बार काउंसिल उसको सीधा सीधा डिसिप्लिनरी कमेटी को ट्रांसफर करने से पहले एक चेक है, वो ये चेक करेगी कि इसके जो कंटेंट है वो वाकई एक केस प्रेमा फेसाई मेड आउट हो रहा है या नहीं, कहीं ये केस फ्रिवोलस तो नहीं है. उसके ऊपर जजमेंट है और जस्टिस कृष्ण अय्यर के कमेंट है. It's like a preliminary inquiry. So almost this is the satisfaction, not inquiry. Inquiry means they will raise question to someone. ये क्वेश्चन नहीं रेज करेंगे, ये खुद में वहां पर सेटिस्फाई होंगे कि दिस कंप्लेंट हैज sufficient substance or not. That is called the reason to believe that any advocate on its role has been guilty of professional or other misconduct. Then
it shall refer the case to its disciplinary committee for disposal. So this is the reference पैरामीटर कि आपको रेफर करना है या नहीं करना है. अनलेस अंटिल दे विल नॉट रेफर, केस इनिशिएट नहीं होगा, फर्दर प्रोसीड नहीं होगा. सॉरी, इनिशिएट कहना ठीक नहीं. नाउ यहां पर दूसरा फ्रेज और इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर, दैट इज द मिसकंडक्ट. तो what is this professional misconduct? What is means other misconduct? Any conduct expected to do during discharge of duty of profession concerned to related to the profession, that is called the professional conduct, professional duty, and violation of that particular part is called the professional misconduct. Simply, which is the violation of code of conduct, that is called misconduct, means dereliction of duty. But what does it mean, the other misconduct? So what would be the other? The scope of the word other is very large. Whatever it may be. It may be in your personal domain, it may be on your other conduct, whatever may be possible. That is also a tract for the punishment of advocate of for misconduct. So this is the additional layer of your conduct and discipline is available. Now the next question is, what is exactly misconduct? Prima facie and directly we can say violation of all these code shall be treated as misconduct. But it doesn't mean the only violation of this code is sufficient. Or we can say the exhaustive or complete code is there. The answer is no. So this is including. So what is others? Others may be not penned down, may be realized from time to time. It is not fit for the profession. It also may be treated as misconduct. So the minimum coded for the duty, it's a minimum. It's not an exhaustive, it's not incomplete, but at least it is expected. The word I'm using, the at least, which is the minimum standard. Am I clear up to this point or not? Or is there any doubt? सर ये जो So, सर एक सर छोटा सा सर, ये जो चैप्टर इसका जो मिसकंडक्ट का पावर का पनिशमेंट का सर, ये एटिकेट्स का ये जो डिराइव कर रहा है सर, जैसे हम रेफरेंस देते हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है व्हाट आर द अदर मिसकंडक्ट, तो सर हम इसको आपस में कोरिलेट कैसे करें अपेंडिक्स को जो उसके साथ जो दिया हुआ सर, रीड विद करके करें सर या कैसे करना पड़ता है सर? नहीं, ये वर्ड आपको कनेक्ट करने के वर्ड आपको ढूंढने पड़ेंगे. इंटेंशन आपके ब्रेन में क्लियर है ना, समझ में आनी चाहिए. कनेक्टिंग वर्ड जो है ना अहमद साहब, कैसे करें, ये सवाल का जवाब मैं देना नहीं चाहता हूँ. लिटरली रीजन ये है कि एक बार आप इंटरकनेक्ट करना सीख लेंगे अपने ब्रेन में स्ट्रगल करके, तो ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में हजारों और लाखों बार आना है ड्यूरिंग योर प्रोफेशन. सो ऑन दैट पॉइंट आई वांट टू लीव टू यू कि कैसे आप उसको रिलेट करेंगे. माय पॉइंट इज दिस कि यदि आपको ये बातें समझ में आ गई है तो आप रिलेट करने की कोशिश तो भरपूर करेंगे अप टू योर सेटिस्फेक्शन. चाहे आप जैसे भी करें, आप कर लेंगे. मेरा कंसर्न ये है कि आपको ये पॉइंट आउट कराना, इसकी सेंसिटिविटी को समझा देना, और आप यदि फोकस्ड हैं और समझ गए हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल कनेक्ट इट. व्हाट वर्ड इज रिक्वायर्ड वो आप अपने आप ढूंढ लेंगे,
अपने आप वो एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट कर लेंगे, अपने आप वो मैसेज होगा, एंड इट वुड बी द लर्निंग फॉर यू. एंड वंस यू विल डू, देन एवरी टाइम यू विल डू. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द डू द प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत सारे सैंपल्स मिल जाएंगे, आप वहां से कनेक्ट कर. But the point is, what I want to refer here, where on the receipt of a complaint, फिर से मैं ये चलूं, तो यहाँ पर एक कंप्लेन वर्ड है, इसके अपने स्कोप, एम्बिट, लिमिटेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स हैं, और अदरवाइज इट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट मीनिंग एंड स्कोप को उसको एनलार्ज करता है. स्टेट बार काउंसिल, रीजन टू बिलीव, प्रोफेशनल और अदर, specifically the word misconduct, and it is referral. It shall refer. Shall means mandatory. Refer the case for disposal to the disciplinary committee. Am I clear up to this point or not? यस सर. अच्छा, एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं. एक क्वेश्चन था 3-4 साल पहले, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बिफोर disciplinary committee of an advocate under this section 35. एक एग्जामिनी ने स्टैंडर्ड टू बिलीव, सॉरी स्टैंडर्ड टू प्रूफ, इसकी बात यदि मैं करूं तो दो स्टैंडर्ड की लिमिट है. एक है कि स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है कि इतना मैच किया तो क्या, अदरवाइज नहीं. एक है लिबरल स्टैंडर्ड, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी उसको बोलते हैं. स्ट्रिक्ट जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, दैट इज द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस, और उसमें हम ये कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एवरीथिंग वी हैव टू एस्टेब्लिश बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. यदि वो डाउटफुल आ गया तो उसको आप एक्यूट करेंगे, राइट. बाइज्जत भले ही ना करें, क्योंकि बाइज्जत बड़ी अलग बात होती है, अदरवाइज बेनिफिट ऑफ डाउट उसको देंगे. स्ट्रिक्टली यू हैव टू मैच द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ. और प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि सिविल केस में होता है, मतलब आपकी ये संभावना है, इसकी ये संभावना है, किसकी ज्यादा संभावना है, उस बेसिस पर वहां चलता है. दिस इज द प्रीपॉन्डरेंस. सो दीज आर द टू लेयर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ. यहाँ एडवोकेट एक्ट, इट इज क्वासी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, समवेयर पेनल भी है, समवेयर सिविल भी है. तो इसका जो है ना, दिस इज मच हायर देन द प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लोअर देन द बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना यहाँ जरूरी नहीं है. आपको थोड़ा भी डाउट भी है ना, फिर भी आपको पनिशमेंट इन्वोक किया जा सकता है. प्रोबेबिलिटी दिख जाए कि आपकी संभावना है यहाँ इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तब आपको स्कॉट फ्री नहीं किया जाएगा, आपको वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा और पनिशमेंट अवॉर्ड कर दिया जाएगा. So this is the standard. This is the exact situation ki above the preponderance of probability and below the beyond reasonable doubt is the standard of this disciplinary proceeding. This is the answer. Only this जो मैंने अभी बोला. But despite of answering this particular questions, that man was explained the reason to believe. आप जरा इमेजिन कीजिए, रीजन ऑफ बिलीव वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले का स्टेज है. डोंट बी कंफ्यूज विद द रीजन ऑफ बिलीव एंड स्टैंडर्ड टू प्रूफ. स्टैंडर्ड टू प्रूफ जो है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रायल एंड दिस इज द प्री ट्रायल स्टेज. एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? यस सर.
So don't get confused on that particular line. Now, अब देखिए क्या होता है, डिसिप्लिनरी को रेफर करेंगे and thereafter what would happen? The state bar council may either of its own motion or an application made to it by any person interested withdraw a proceedings pending before its disciplinary committee and direct the inquiry to be made by any other disciplinary committee of the state bar council. So this is the withdrawal of one committee to other committee. प्रोसीजरल पार्ट है, इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं. The disciplinary committee of the state bar council shall fix a date for the hearing for the case and shall cause a notice therefore thereof to be given to an advocate concerned and to the advocate general of the state. Third, the disciplinary committee of the state bar council, after giving advocate concerned and the advocate general an opportunity of being heard, may make any of the following orders. So this is the important part. 3, may make any of the following orders, namely, क्या order होगा वो देखिए. Dismiss the complaint, or where the proceedings were initiated at the instance of the state bar council, direct the proceeding be filed. दूसरा ये है रेप्रीमांड द एडवोकेट. पहला ये है कि फ्री कर देना, दूसरा ये है रेप्रीमांड मतलब डांट फटकार. सो मिनिमम लेवल ऑफ पनिशमेंट थोड़ी ग्रेविटी और इंक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड द सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर अ पीरियड एज इट मे डीम फिट. थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस से बाहर कर दो, फिर उसके बाद रीस्टोर कर देना. एंड फोर्थ इज remove the name of advocate from the state bar state of state role of advocate. So fourth punishment is the very high. Intensity is extremely high. You are unfit for this profession. Remove it. So this चार तरीके के पनिशमेंट ही इन्वोक किए जा सकते हैं, पांचवा यहाँ नहीं है. पांचवा, where an advocate is suspended from a period under clause C of subsection 3, he shall during the period of suspension be debarred from the practicing in any court or from any authority or any person in India, where any notice is issued to the Advocate General under subsection 2, the Advocate General may appear before the disciplinary committee for the State Bar Council either in person or through any advocate appearing on his behalf. वो कर सकते हैं, disciplinary proceedings का हो सकता है. Now, disciplinary power of Bar Council of India, where on receipt of a complaint or otherwise, the Bar Council of India has reason to believe that any advocate whose name is not entered on any state roll has been guilty of professional or other misconduct, it shall refer the case for the disposal of its disciplinary committee. तो बार काउंसिल भी अपने डिसिप्लिनरी कमेटी को रेफर कर सकता है, लेकिन इसका केस बिल्कुल अलग है. वो रोल पे जो है ही नहीं, उसके लिए यदि आपको कंप्लेन करना है तो कहाँ करेंगे? बार काउंसिल को कंप्लेन करेंगे कि ये आदमी किसी भी रोल पे नहीं है और यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, और उसकी वो एग्जामिन शुरू होगा. Notwithstanding anything contained in this chapter, the disciplinary committee of the Bar Council of India may, either of its own motion or on receipt on a report of the State Bar Council or on an application made to it by any person interested, withdraw such and such. The disciplinary committee of the Bar Council ऑफ इंडिया इन डिस्पोजल ऑफ, ये सारे वही सारे चीजें हैं जो ऊपर थी, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उस पर भी जाने की जरूरत नहीं. अपील लेट अस कम टू द अपील. यहाँ दो तरीके की अपील है, वन अपील अंडर सेक्शन 37 एंड अनदर अपील अंडर सेक्शन 38. सो अपील टू
Bar Council of India against the order of State Bar Council. 35 के against 37 है. So any person aggrieved by an order of the disciplinary committee of the State Bar Council made under section 35 or the Advocate General of the state may within 60 days, there is a limitation, within 60 days of the state of the date of commencement of the order from him, 50 days from of the date of communication of the order, जिस दिन वो receive करेगा to him, prefer an appeal to the Bar Council of India. Every such appeal shall be heard by the disciplinary committee of the Bar Council of India, which may pass such order thereon as deemed fit, provided such and such, such and such. And section 38, appeal to the Supreme Court. So this is the second appeal. Any person aggrieved by an order made by the disciplinary committee of the Bar Council of India under section 36 or 37, दोनों है. 37 is appeal, 36 is direct. May within 60 days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal to Supreme Court, and the Supreme Court may pass such order, including an order varying the punishment and deem fit, ये कह लें ज्यादा better है. So this section empower the Supreme Court to hear the appeal. ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है, एट द सेम टाइम पार्टी को राइट क्रिएट करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट अपील करें एज एन अपील. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Now, अब इन सारे चीजों को समझने के बाद रिव्यू है, लिमिटेशंस हैं, वो सारे हैं, वो सारा आप देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मुझे बस ये 3 सेक्शन पे फोकस करना था. इट वाज द 38, 37 एंड 35. एडवोकेट एक्ट में मैं इससे ज्यादा फोकस करना नहीं चाहता, उसके बहुत ज्यादा रिलेवेंस है नहीं. These only 3 sections, and some section is concerned to the chapter 4, which is the right to practice for your clarity in concept. These are the one page. If you want to take a printout, this is the one page printout, page number 19 and page number 20 and page number 20, and thereafter this 21 and 22. Hardly, if you will type all these things, 2 and 3 pages are there, which printout is required, not much more. So section 35 is the important, or especially 35(1). Now, I'm leaving this particular part and entering into this particular section, which is called the standard of professional conduct and etiquette to be observed by the advocate. Just give me 1 minute. I'm just coming back within 1 minute.
Yes. I'm sorry. So this part was asked in, in the exam, in the AoR examination. This is an objective for this standard. अच्छा, इसमें जब आप रेफर करेंगे ना, जब इस स्टैंडर्ड को रेफर करेंगे तो ये पार्ट आप जरूर मेंशन करेंगे. The standard of professional conduct and etiquette to be observed by an advocate made by the Bar Council of India, empowered under section 49(1)(c) of the Advocate Act 1961. जब भी इसका डिस्कशन करेंगे आप ये रेफरेंस जरूर देंगे. ये आपके आंसर को अथॉरिटी देता है कि यस इट इज कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन. रेफरेंस देने की आदत है, वो हमेशा आपको ऑथेंटिकेट करेगा आपके आंसर को. एक एक्स्ट्रा मार्क जरूर फेच करेगा पर आंसर, यदि वो मोर देन 5 मार्क्स है देन. नाउ this is objective for the advocate. An advocate shall at all time This is preamble of the. yes comport himself in a manner befitting his status as an officer of the court. A privileged member of the community and a gentleman, bearing in mind that what may be lawful and normal for a person who is not a member of bar or for a member of bar in his non-professional capacity may still be improper for an advocate. Full stop. Without prejudice to the generality of the foregoing obligations, an advocate shall fearlessly uphold the interest of his client and in his conduct conforms the rule hereinafter mentioned both in letter and spirit. The rules hereinafter mentioned contain canons of conduct and etiquette adopted in general guides. It specific mention thereof shall not be construed as a denial of the exercise of others, equally imperative through not specifically mentioned. So मैं सीधा सीधा इस लास्ट लाइन पे फोकस करता हूं जो हमने कहा था. जरा उसको सपोर्ट में ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ वेरी क्लियर कि द रूल्स hereinafter mentioned. The rules means what? Which is mentioned there. Rule 1, Rule 2, Rule 3 under all these sections. The rules hereinafter mentioned contains canon of conduct and etiquette adopted as general guides. It specific mention thereof shall not be construed as denial of the existence of others, equally imperative though not specifically mentioned. जो इक्वली इंपरेटिव है लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिनाई किया गया है. सो मीनिंग इज दैट
Whatever is written and unwritten, everything is included. Not only written, but also not written. जो छूटा हुआ है और जो जेन्युइन पार्ट है, इट कैन बी इंक्लूडेड. और क्या छूटा हुआ है वो टाइम टू टाइम पता चलेगा और वो उस बेसिस पर चलेगा. एंड दैट इज कॉल्ड द ethics and morality. What is the immoral, that is also should not exercise. Now I'm coming to the first sentence. There are three sentences. Another sentence, see, this is the middle sentence. Without prejudice to the generality of the foregoing obligation, an advocate shall, without prejudice to the generality of the foregoing obligation. तो वो ऊपर वाला ऑब्लिगेशन है, वो तो है ही, बिना प्रेजुडिस हुए. An advocate shall fearlessly uphold the interest of the client, fearlessly, and in his conduct conform the rules hereinafter mentioned, both in letter and spirit. जो भी रूल मेंशन किया हुआ है नीचे, वो आपके कंडक्ट से कंफर्म होना चाहिए. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Without prejudice means what? जो क्लाइंट आपको पैसा दे उसके लिए अच्छा कंडक्ट करें, जो पैसा ना दे या कम दे उसके लिए अलग बिहेवियर लेंगे, दिस इज नॉट अलाउड. तो यू आर प्रेजुडिस नाउ. सर, जितना पैसा उतना काम, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. काम का आपका स्टैंडर्ड है, वो होगा, वो पैसा दे या ना दे, दैट इज योर ओन कंसर्न. या तो आप काम करें या ना करें. फर्स्ट पैराग्राफ पे मैं जा रहा हूं, फर्स्ट सेंटेंस पे, सॉरी. एन एडवोकेट शैल at all times. All times means सिर्फ कोर्ट टाइम नहीं है, क्लाइंट टाइम नहीं है, आपका पर्सनल, मैंने यू आर इन पब्लिक, यू नो द वर्ड ऑल टाइम्स आपको एक पब्लिक डोमेन में लेकर के आता है. आप 24/7 ऑन ड्यूटी. So an advocate shall at all times comport himself in a manner befitting his status as an officer of the court. आप ये महसूस कीजिए कि यू आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, अ प्रिविलेज मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड अ जेंटलमैन. Bearing in mind that what may be lawful and normal for a person who is not a member of bar, or for a member of bar in his non-professional capacity, may still be improper for an advocate. So other professional conduct is also covered here. So this is the objective. मैं ऑब्जेक्टिव पे नहीं जाऊंगा. अब आप लोग इसको पूरा पढ़िए, समझिए, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और सिर्फ पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं. देयर आर 46 और 48 रूल्स. उतना मैं पढ़ूंगा नहीं अभी, बस आपको सेक्शन वाइज लेकर के जाता हूं. दिस इज द section 1, which is the duty to quote. If someone will read this up to 10 rules, which is dedicated to duty to quote. An advocate shall, during the presentation of his case and while otherwise acting before a court, conduct himself with dignity and self-respect. So catch line is this: conduct himself with dignity and self-respect. You cannot compromise with your dignity and self-respect. He shall not be servile
or whenever there is a proper ground for serious complaint against the judicial officer, it shall be his rights and duty to submit his grievance to a proper authority. मतलब समझे? आप अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और यदि सामने वाला ये जुडिशियल ऑफिसर कुछ इस तरीके से करता है, आप वहां रिएक्ट करने के बजाय, ये आपका राइट एंड ड्यूटी है कि आप ग्रीवांस रेज करें। ड्यूटी भी है और राइट भी है, यानी यू आर बाउंड टू, गलत को बर्दाश्त नहीं करना। राइट को तो गिव अप कर सकते हैं, ड्यूटी कैन नॉट गिव अप। द पॉइंट इज हियर, it shall be his rights and duty to submit his grievances to the proper authorities. So we can say this is for the conduct himself with dignity and self-respect. Number one. इसी लाइन से आप पूरे पैराग्राफ को आप कर सकते हैं, या पूरा इसी पॉइंट को डेडिकेट कर सकते हैं। एन एडवोकेट शैल मेंटेन टुवर्ड्स द कोर्ट अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। चलिए, आपका प्रोटेक्शन हो गया, आप कोर्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, bearing in mind that the dignity of the judicial officer is essential. Dignity of the judicial officer is essential for survival of free community. ये जरूरी है, and this is connecting to twin element of administration of justice: independent bar and independent bench. दोनों इंडिपेंडेंट और फियरलेस हो, दोनों इन्फ्लुएंस एक दूसरे को ना करे, डोमिनेट ना करे। दिस वाज फर्स्ट टू लाइन. An advocate shall not influence the decision of any court by any illegal or improper means. Private communication with judges relating to pending cases are forbidden. यदि प्राइवेट कम्युनिकेशन करते हैं तो किसी केस, पेंडिंग केस के सिलसिले में मत कीजिए. An advocate shall use his best effort to restrain and prevent his client from, हाँ, this is also important. तीसरा क्या कहता है? तीसरा ये कहता है कि आप कोई भी इलीगल मीन्स और इम्प्रॉपर मीन्स नहीं अप्रोच करेंगे, उसके पार्ट नहीं बनेंगे. और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड एडवोकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द सुप्रीम कोर्ट, एंड एडवोकेट शैल यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स टू restrain and prevent his client from resorting to sharp or unfair practice, from doing anything in relation to court, opposing counsel or parties which the advocate himself ought not to do. Even the proper word should be used into the petition. आप ये नहीं कह सकते कि क्लाइंट ने जी इंसिस्ट किया कि ये लिख दो तो हमने लिख दिया. You are duty bound to give your best efforts to restrain and prevent his client from resorting to sharp or unfair practice, from doing anything in relation to the court, opposite counsel, or parties which the advocate himself ought not to do. An advocate shall refuse to represent, एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड है. आपको बाइंडिंग है, केस लेना ही लेना है, लेकिन ये ग्राउंड काफी है आपको रिफ्यूज करने के. An advocate shall refuse to client who persist in such improper conduct. He shall not consider himself a mere mouthpiece of the client and shall exercise his own judgment. Exercise his own judgment in the use of
restrained language in correspondence, avoiding scandalous attack in pleadings, and using intemperate language during the argument in court. I guess this four is really much important for the Supreme Court because Supreme Court commented on various occasions regarding this particular part and even taken initiative for the code of conduct. Contempt, unbecoming of AoR because of this part only. So duty to the court itself the important part. 1 2 3 is there. 1 2 3 means what? Rule 1, rule 2, rule 3. Rule 1 क्या कहता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. रूल 2 क्या कहता है? कोर्ट की सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. और 3 क्या कहता है कि कोई इलीगल मीन नहीं है, मैं नहीं कर रहा. माने इन दोनों के बीच में कोई इलीगल एटमॉस्फेयर मुझे नहीं क्रिएट करना है. ये 3 कहता है. चौथा ये कहता है कि क्लाइंट के बिहाफ पे या क्लाइंट को भी आप रोकेंगे और यदि क्लाइंट ऐसा करना चाह रहा है, स्कैंडलियस जिसको कहते हैं, तो आप केस को छोड़ सकते हैं. यू हैव अ राइट टू रिफ्यूज. आप उसके माउथ पीस नहीं है. An advocate shall appear in court at all time. And fifth is the important. First 5 is literally is the important. And इसके लिए इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. एंड एडवोकेट शैल अपीयर इन कोर्ट एंड at all times only in prescribed dress, and his appearance shall also be presentable. भाई इसका तो हम सब बहुत ख्याल रखते हैं, इसको तो जीते हैं ड्रेस कोड. लेकिन ये कंसर्न यहाँ पर एक गड़बड़ी क्या होता है? एन एडवोकेट शैल अपीयर इन कोर्ट, बट द क्वेश्चन इज कि कई बार पब्लिक प्लेस पे भी लोग नजर आते हैं. मैं वहां नहीं जा रहा. सो फर्स्ट 5 इज ऑलमोस्ट क्लियर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको आप जरूर ध्यान में रखिए. नेक्स्ट, एन एडवोकेट शैल नॉट इंटर अपीयरेंस, एक्ट, प्लीड और प्रैक्टिस. सो ये सब आपको करना है. क्या नहीं करना है वो आगे अब शुरू हो रहा है. An advocate shall not enter appearance, act, plead, or practice. See, the word is inter appearance 1, act 2, plead 3. Act means filing and otherwise, or practice in any way before a court, tribunal, or authority mentioned in section 30. If condition started from here, if the sole or any member thereof is related to be advocate as father, grandfather, son, grandson, uncle, brother, nephew, first cousin, husband, wife, mother, daughter, sister, aunt, niece, father-in-law, daughter-in-law और sister-in-law. इसमें एक चीज नहीं है और वो होना चाहिए या नहीं वो आप लोग बताएंगे. बेस्ट फ्रेंड. जो इन्फ्लुएंस कर सकता हो. मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड हैं जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. डीजे यहाँ से अपॉइंट होकर के गए थे और मुझे लगता है कि दे आर वेरी क्लोज टू मी और मुझे उनके सामने अपियर नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेजुडिस का सेंस आता है. हाउएवर केस का रिप्रेजेंटेशन का सवाल है. बोथ आर रियली यू नो मेंटेन देयर ओन स्टैंडर्ड कि ये सारे रूल्स को फॉलो करने ही करने हैं बाय डिफॉल्ट. और केस अपनी जगह है, रिप्रेजेंट करना है वो भी अलग.
हम लोग मेंटेन करते हैं, अभी तक ओकेजन नहीं आया, लेकिन एक फ्रेंड में भी एक ऑप्शन यहाँ आता है। बट एनीवे जो यहाँ है हम उसको लेते हैं अभी, सर क्योंकि वो अदरवाइज वाले सेक्शन में आ जाएगा जो ऑब्जेक्टिव के लास्ट लाइन में था, व्हिच इज नॉट कंसिडर्ड। ये सर आपकी डेफिनेशन इसमें कवर हो जाती है सर, एमिकस क्यूरी में सर। एमिकस क्यूरी इज अ डेफिनेशन फ्रेंड ऑफ कोर्ट। यस, मतलब फ्रेंड कैन हैव, फ्रेंड ऑफ कोर्ट इज द डिफरेंट फ्रेज, सेंस आर वेरी डिफरेंट। सो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर ये कहता है कि एनी मेंबर रिलेटेड टू द एडवोकेट एज फादर एंड अदरवाइज, ये रिलेशन को क्यों रिस्ट्रेन किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन इज अवेलेबल, डाउट क्रिएट होता है ऑन दैट कंटेक्स्ट। यदि कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि एक्सट्रीम एक्सरसाइज हम लोग अपने चीज का करते हैं फ्रेंड्स के साथ ही, isn't it? तो उस सेंस में मैं बोल रहा था, क्योंकि उसको डाल करके बहुत कॉम्प्लिकेट किया जा सकता था, कॉम्प्लिकेट हो जाता, वो नहीं डालना भी ठीक है, बट क्लोज रिलेटिव्स को रिस्ट्रेन करना जरूरी है। और ये रिस्ट्रेन करने की बात नहीं, अपने आप में एक कंडक्ट है, खुद से लगना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए। कंट्रोल। So an advocate shall not bear band and gown. So 7 is this. 7 is contrary to 5 or supplement to 5. An advocate shall not bear band or gown in public place other than in court, except on such ceremonial occasion and at such place as the bar council and the court may prescribe. Eight, an advocate shall not appear in or before any court or tribunal or any other authority for or against an organization or an institution or society or corporation if he is a member of executive committee of the organization or institution or society or corporation. Executive committee, by whatever name it may be called, shall include any committee or body or a person which for the time being is vested with the general management of the affairs of the organization or institution, society or corporation, provided the amicus provisions is there. So 9, an advocate shall not act or plead in any manner in which he himself is particularly interested. So illustrations is also there. An advocate shall not stand as in surety or certify the soundness of surety for his client required for the purpose of any legal proceedings. तो ये 10 तो आप लोग एकदम दिमाग में रख लीजिए, एकदम सेट कर लीजिए कि यू एनी एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए आप श्योरिटी नहीं बनेंगे, ना ही वहां सर्टिफाई करें। दिस इज अ वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस। ओके, इसमें फंसने का भी चांस रहता है कई बार। नाउ ड्यूटी टू द क्लाइंट। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं पूरा पढ़ूं या आप लोग के लिए छोड़ दूं? सर पढ़ लेंगे सर, हम पढ़ लेंगे सर। वो 22-23 ये है न, पढ़ने से ये नहीं है, आगे चल सकते हैं हम लोग, हम पढ़ लेंगे। we'll read it sir, we'll read it. नहीं, मैं ये सुनना चाह रहा था अंबुज सर से, अंबुज सर क्या कहते हैं? सर पढ़ लेंगे, बिल्कुल पढ़ लेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे एक मोशन में लाना था, वो हमने ले लिया। सो सच सॉर्ट ऑफ वेरियस ड्यूटीज आर देयर। उसमें एक चीज आप याद रखिएगा, बस अभी एक ही सेक्शन को हमने एलोबरेट किया था,
मैं थोड़ा डिटेल्स पे आऊं, आपको मैं ये क्लियर करूं, ये याद रखिए। फिर से मैं जरा इसको ये करूं, देयर आर सर्टेन सेक्शन, वन सेक्शन आप याद रखिएगा तो अपने आप लिखाएगा, सेक्शन 1 इज ड्यूटी टू कोर्ट, दिस इज सेक्शन 2, 10 उधर है, वो बिल्कुल क्लियर है, एक 10 का जो बंडल था उधर चला गया। ड्यूटी टू क्लाइंट, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 11 to 33, 33। सेक्शन 3 ड्यूटी टू ओपोनेंट, इस पे 2 ही हैं। एंड सेक्शन 4 ड्यूटी टू कोलीग्स, see one is this section 5 duty in imparting training, इसको मैं पढ़ना चाहता हूं। It is improper for an advocate to demand or accept fees. It is improper for an advocate to demand and accept fees or any premium for any person as a consideration for imparting in law under the rules prescribed under the Bar Council to enact such person to qualify for enrollment under the Advocate Act 1960. मैं लेता हूं ये जो हमारा स्ट्राइव टू एक्सलेंस और ये कोर्स मेंटरशिप जो चल रहा है, दिस इज अंडर दिस ड्यूटी ओनली, and it is improper for an advocate to demand or accept fees or any premium. Duty to render legal aid, this is only one duty is dedicated, 48, and the section 7, seventh section is the restriction on other employment. So इस हेड को टोटल 7 हेड है, इतना हेड को आप जरूर याद रखिएगा, ताकि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन रन करते हैं, अपने आप 2-3 तो लिखा ही जाएगा। So this is the rules. So coming back to the first slide, today we discussed this third part, even the fourth part, section 0 to 13. Roughly, we also have a look on this chapter 3, not a detailed, but on index only. But we specifically discussed these 2 parts. So we can say this 6 and 7, isn't it? Including the Bar Council rules. So I done for the day. Thank you, sir. It was very engrossing today. Now inviting your questions and comment on today's discussion. क्योंकि इसमें बहुत नई चीज नहीं है, we discuss what we are trying to live in. In fact, what we are adopted to live in religiously. कल सर आपने जो क्वेश्चंस दिए थे ना, उस समय 40-45 क्वेश्चंस दिए थे, अलग अलग इसमें कैसे पूछे जाते। कल वो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो लग रहा था कि ये
कैसे ये आंसर करूंगा, ये लग रहा था जो है बता। ये आज ये होने के बाद उसको कैसे देखना चाहिए, पर्टिकुलरली सेक्शन 35, बाद में ये जो आपने 49(1)(c) के जो स्टैंडर्ड रूल्स बताए, उस हिसाब से वो अभी जरा उसमें जा सकते हैं और आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। नहीं, मैं क्या कहता हूँ कि एज ए लॉयर, जिस दिन हमारा एनरोलमेंट है एज ए लॉयर, उस दिन को हम लोगों को एनरोलमेंट डे मनाना चाहिए, बर्थडे टाइप से। ओके बराबर। और उस दिन ये पूरा कोड ऑफ कंडक्ट साल में एक बार जरूर पूरा पढ़ना चाहिए। सर आपका तो लास्ट मंथ अभी तो 10 है, 10 डेज बैक सर। आपको तो सर हमें केक काटना चाहिए था। तो ये जो पार्ट है ना, ये जरूरी चीज है हर एक के लाइफ में। कहने का मतलब मेरा ये है, क्यों हमने ये सजेस्ट किया कि so many persons I met as an advocate in my life, बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो 20 साल 25 साल 30 साल पुराने लॉयर हैं, 10 साल, लेकिन डिग्री लेने के बाद और एक बार एनरोलमेंट होने के बाद लोग इस चीज को पीछे मुड़ करके देखते नहीं है कि व्हाट इज द कंडक्ट। इसका एक बार साल में रिमाइंड रखना अपने ब्रेन में अपने लिए रिक्वायर्ड, और उसके लिए फिट ओकेजन है कि हम इस प्रोफेशन में कब एंटर हुए। और एक बात और पता चल जाएगा कि कितने साल हो गए, कि कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। बराबर है। सो केक काटना तो बनता है महेश सर। Very good, sir. Very good. Sir, अपने बच्चों के साथ भी बैठ करके भी एक बार आप ये कर लें, और उसके बाद रूम में छुप करके पढ़ जरूर लें वो कोड ऑफ कंडक्ट और स्टैंडर्ड, वो अपने आप को इंटैक्ट रखता है। क्या होता है सर, अभी अगर हम एक कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझो अभी हम इधर AoR के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इतने सब टॉपिक ये करना आ रहे हैं, यानी स्टडी करना पड़ता है। लेकिन जब एक कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसमें इतना उलझ जाता है कि उसको इधर उधर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सुधीर सर, मैं आपको ये बताऊं, हर एक लॉयर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एवरी डे ये सारे कंडक्ट को कोर्ट रूम में वो जीता है। हाँ जीता है, वो प्रैक्टिकली मैंने जीता वर्ड है। यूज किया कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, एवरीवन। यदि कोई भी आदमी ओपन प्लेस पे आपको कोट बैंड गॉन पहना हुआ मिलेगा, यू फील डिस्टर्बेंस, बराबर, है ना। बराबर है, तो कुछ भी इसके अगेंस्ट होता है ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब करता है। बराबर, दरअसल ये आपके नसों में जितनी खून बह रही है ना, उसके साथ ये फ्लो करता रहता है, बराबर आपके है, दिमाग से लेकर के बराबर। हर नस पे। बट मैंने इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि वो याद रहने के बाद आदमी कॉन्शियसली अलर्ट हो जाता है। ये हमारे वेन में है, वी आर लिविंग एवरी डे, और जब जरूरत पड़ती है तो हम कंसल्ट करते ही हैं, पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ आवर लाइफ। एवरी वॉक ऑफ लाइफ हम लोग उसको जीते रहते हैं। लेकिन ये सर बात ये है कि ना पढ़ने के बार बाद सर सर ये बार एसोसिएशन और जो अपना बार काउंसिल है, इन सब को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एडवोकेट्स के लिए ये सब चीज बीच बीच में करवाना चाहिए। सीए सर मैं इंस्टीट्यूट एक और बात अदर बताऊं, एक बात इंस्टीट्यूट मैं बताऊं, अपने अम्बू ये सर, के लिए ना करवाता रहता है सर। अम्बू सर एक बात मैं बताऊं, मुझे हम्म, एक चीज बहुत ज्यादा अपील करता है, वो ये करता है कि मेरी ड्यूटी क्या है। अभी ये जो आर्टिकल में ग्रुप बन रहा है, उसमें जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसका नाम है आर्टिकल 51AJ, which is talking about the fundamental duty of the citizen. Duty of the citizen. See, everyone is here is running for their own right. No one is talking about कि उसकी ड्यूटी क्या है। वो दूसरे की ड्यूटी को जरूर याद दिलाएगा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको करना चाहिए। नहीं, तो रिस्पेक्टेड राजीव सर, सिस्टम आपकी बात से बिल्कुल सिस्टम सर, सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पॉइंट में डाउट करना चाह रहा हूँ, प्लीज लेट मी अलाउ मी टू कंप्लीट। जी प्लीज सर। पॉइंट यहाँ पर ये है
if we will focus on our right, sorry, our duty, ठीक है, then automatically बहुत सारे system in place आ जाते हैं, rather than invoking others duty. तो यदि आप ऐसा करने लगे, अभी आप एक चीज देखिए, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इस ग्रुप को शुरू किया, मैंने इस तरीके से मेंटरिंग सेशन शुरू किए, और उसके बाद एक कल्चर सा शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप देखेंगे, सो एवरीवन इज स्टार्टिंग सर्टेन लेक्चर एंड यू नो फॉर द मेंटरिंग फॉर ये वो. सो मैंने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज की, मैंने किसी को इन्वोक नहीं किया, बार काउंसिल को मैंने नहीं बोला कि लेक्चर सीरीज कराओ, स्कोरा को हमने नहीं बोला, बट एवरीथिंग इज इन प्लेस. सर बताइए हो रहा है या नहीं? So that सर is the great satisfaction for मेरा me. कहना Point ये is है, this, Sir, you are the मैं inspiration, ये sir. कहना चाह रहा हूँ who कि will take the जैसे क्या है ना initiative कि हर question आदमी here? स्वभाव से ईमानदार है, हेल्पफुल सर वो एटीट्यूड डिबेट का में है, मैं नहीं जा रहा, लेकिन उसके डिबेट अंदर में का चीज को जागृत करने के लिए ना, जैसे हम लोग मान लीजिए एडवोकेट एक्ट है, इतने साल के प्रैक्टिस हो गए, कभी उठाने का नहीं, हाँ बार बार सुनते आ रहे हैं, ऑफिस है, हमें अपना ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन उस चीज को जागृत कब हुआ? जब AoR एग्जाम के लिए एपियर होने के लिए सोचा, तो वही अगर ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एडवोकेट के ये प्रोग्राम होगा तो लोगों के अंदर ये जागृत हो जाएगी सर. सर वही तो मैं कह रहा हूँ, यू आर द प्रिविलेज कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी, नो नीड, मैंने आप करें ना जागृत, आप अपने आप को करें, अपने आप हो जाएगा. मैंने तो वही Sir, कहा ना, हमने ये ग्रुप Rajiv sir, शुरू एक किया. humble submission है. Mind, हाँ, ability, thinking, attitude with the proper service and attitude, where we face the situation of service from these years, has a standard of etiquette to follow the proper procedure to maintain the standard and to come to the destiny of the point in a proper sequence, where our circumstances and surroundings were in the middle class attitudes to have the standard with time ability management. It's a standard professional etiquette to give the proper sequence to get the proper destiny. Sir, we find the destiny point in your students and attitudes as since this years. I am not talking the this way. This is today opportunity for me. Sir, the godliness and behavior and attitude everybody will not have, and the sequence of the behavioral and attitude where we face the circumstances, you are the example, sir. It is a source. In one of the lecture, I represented in Hyderabad in arbitration, sir. I had a great value of your words, sir. And I simply say, अरे sir, मूर्ति we सर, follow, आप sir, sir. Let me देखिए, submit. This is a follow of activity. This is a professional attitude. Let this continue and systematic, sir. With good अब health and पॉज कर teamwork, लीजिए सर, बाउंसर it's जा a रहा great, है. sir, great day, sir, sir. अब पॉज कर लीजिए, अब बाउंसर जा रहा है. क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मैं Sir, ये sir, कह sir. रहा हूँ कि एवरीवन विल स्टैंड लाइक दिस, व्हाई आई Yes, एम sir, yes, sir. अलोन. आप सब ऐसा ऐसा कीजिए, आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तो चलेगा. दिखाने का मतलब ये है कि But inspiration इफ देने वी वाला विल, रहना ना सर. See, दैट इज the follow up is in the ability of attitude. वही बोल रहा हूँ ना, एक है साइंस रेट में, कृतमेव सुकृतम, सुकृतमिति प्राप्तम, प्राप्तमिति कर्म धर्म योग स्थान लक्ष्यम, लक्ष्यमिति साधनम, साधनमिति मोक्षम. The find of ability and attitude, the godliness and behavior, and your every person's heart, sir. That is the thing. We want that only. We feel दैट very great, sir. That is the मोदी thing. सर, Let दैट us इज be follow, करेक्ट. sir. आई And एम नॉट, you are giving the scope. You are scolding also. This is not the way. This is not the right. प्लीज We'll do like प्लीज this. So we take the part, sir. That's a great thing. Thank you, sir. सर, दैट इज करेक्ट, आई एग्री, मैं मानता हूँ, वो ठीक है, बट व्हाई वन एंड ओनली? Yeah, yes, sir. कहने का मतलब ये है कि एवरीवन विल डू, सो वी शुड, अल्टीमेटली माय पॉइंट इज दिस, वी शुड Yes, sir. must conscious about our duty, Yes, sir. automatically everything would happen. That's my point Yes, only. sir. Yes, sir. If I am confined and aware about our duty, Yes, sir. then everything would happen, even the entire society will come in place. Self-consciousness. Yeah. Yes, of course, yes. So we are the reference for others. Now 24 cross Yes. 7, we are on a stack. Yes, sir. अपना सुधार That is what I संसार want का to. सबसे बड़ा सुधार है सर. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. थैंक यू सो That's the काइंड ऑफ only यू. thing. That's the only thing I want to demonstrate, and even the thing. But Yes. कैसा रहा आज का?
सुपर सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे सर. एकदम बढ़िया रहा सर. Very good, sir. It is a great conference today. एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट. Very engrossing. जो डाउट्स थे सर मन में वो क्लियर हो गए. सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए. और सर आप लोगों ने एक कमिट किया है, इंक्लूडिंग अंबुज सर एंड मूर्ति सर एंड एवरीवन अज्यूम्ड हूएवर इज हियर, कि जो मैंने छोड़ा है वो आप लोग पढ़ेंगे जरूर. और Yes. आज ही. यस सर, यस सर, आज ही पढ़ना पड़ेगा तो कल बात कर सकेंगे. डेफिनेटली सर. Yes, sir. अभी मैं कल दूसरे टॉपिक पे जा पाऊंगा, यस सर. क्योंकि अब दूसरे टॉपिक पे जाना थोड़ा आसान होगा एक बार गो थ्रू करने के बाद. अब हम, बिकॉज दिस इज कंसर्न टू द एज ए जनरल एडवोकेट, नाउ वी विल एंटर इनटू the advocate on record, which is certain additional responsibilities is also there. That is responsibility towards constitution, right? Otherwise तो आप लोगों ने अभी समझा ही है कि क्या है कैसे. So let us conclude for the day. Have a nice day. यस सर. See you tomorrow. Yes, sir. Thank you.